The first question was कि accounting and finance की क्या यहाँ पे job market कैसी है? Well, to be quite honest, job market is a little difficult because of the fact that Germany itself has a lot of candidates who would be vying for the position. So it's not like IT or engineering, jahan pe you can, as soon as you graduate, you can get a lot of job offers compared to other fields. So that's the main thing with accounts and finance. And accounts and finance की एक और चीज़ ये है कि you have to be proficient in German, because even though you might be able to find a company which has English as their official working language, वहाँ पे भी to a certain extent you would need some German. ठीक है? So a good comparison would be, let's say, if you know German, so B1, B2 level would be good, or it could be used in your daily duties and tasks for about like 70% of the time. बाकी 30% है वो इंग्लिश में. अच्छा, और ज़रा हाथ हौला रखें ज़रा कमेंट्स पे, ज़रा एक एक करके पढ़ने दें सबको. लाइन बना के खड़े हो जाए. पाकिस्तानी आप लाइन में नहीं खड़े होते, पर स्टिल थोड़ा सा मैंने भी यहाँ जर्मनी आके सीखा है, बट लाइन में लगे रहें. अच्छा, ए लेवल्स के बाद आई ऑनेस्टली डोंट नो. तो अगर मुझे इस चीज़ का नहीं पता तो आई वुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट. ओके फाइन, लेट्स सी. अभी जरा भाईजान जरा थोड़ा सा हाथ हौला रखे कमेंट्स में. अच्छा चलो इस तरह करते हैं, लेट्स सी, बिकॉज क्वेश्चंस तो बहुत आते जाएंगे. मैं आपको लेट मी टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स एंड वर्क स्टूडेंट. जब आप अपनी डिग्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग योर मास्टर्स, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कि आपका पाकिस्तान में जितना मर्जी वर्क एक्सपीरियंस हो, एम्प्लॉयर्स यहाँ प्रेफर करते हैं कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो व्हाट अ जर्मन कंपनी इज ऑल अबाउट, या जर्मन जो है इकोनॉमी, व्हाट इट्स लाइक टू बी इन दैट, व्हाट इट्स लाइक टू वर्क इन, उनके क्या एथिक्स होते हैं, क्या होता है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस सिंपल फैक्ट मेरी सजेशन सबके लिए ये है कि वो अपने मास्टर स्टडीज के प्रोग्राम के थ्रू ड्यूरिंग द मास्टर स्टडीज प्रोग्राम एटलीस्ट एक इंटर्नशिप या एक वर्क स्टूडेंट यानी वर्किंग स्टूडेंट को प्रेफरेंस दें, क्योंकि एटलीस्ट उसको ये शो कर सकते हैं एज देयर ओन एक्सपीरियंस. Now, what is an internship and what is a work student in Germany? It's basically the same thing. एक ये होता है internship होती है. Usual duration for internship is between 3 to 6 months, and they're usually paid. ठीक है, most of the times they're full time. ठीक है, जो full time internships होती हैं, उनकी जो pay होती है, that ranges between 750 euros to as high as 1500 euros. मेरा अपना personal जो experience है, I worked for 6 months in a company in Düsseldorf. So I was getting paid around 1500 euros. While at the same time, एक और master student, she was working and as an intern as well in a different department. So she was getting around 750 euros per month. ठीक हो गया, ये इंटर्नशिप थी, वेरी सिंपल, फुल टाइम आप काम करते हो, यू गेट वेरी डिसेंट असाइनमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. द अदर थिंग इज अ वर्क स्टूडेंट. वर्क स्टूडेंट इज बेसिकली एक फुल टाइम जॉब को अगर आप पार्ट टाइम करें, यानी फुल टाइम आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं एंड इन द मीन टाइम यू डू एन एक्चुअल जॉब ओनली पार्ट टाइम. दैट्स इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ वर्क स्टूडेंट. ये ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू इंटर्नशिप्स, बिकॉज इसमें ये होता है कि दे लुक फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी अ बिट एक्सपीरियंस्ड. वो जब एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उसमें उन्हें ये हो जाता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ये करते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ न्यू पर्सन जिस पे वो इतने पैसे उनको जी इतना ये बेनिफिट्स देंगे, उनको हाई सैलरीज देंगे, वो ये करते हैं कि वो वर्क स्टूडेंट्स ले लेते हैं और उनको वो काम एलोकेट कर देते हैं जो कि उन्हें कह लो कि एक चीप लेबर के तौर पर मिल जाता है. ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका वर्क स्टूडेंट. नाउ इससे रिलेटेड मेरी अपनी पर्सनल एग्जांपल ये होगी कि चलो मैं आपको a little bit about myself. I did my O and A levels from Pakistan, and then afterwards when I was 17 I went to the US. I did my undergrad from New York, और उसके बाद I worked for 2 years in an investment bank in New York.
or then I came to Pakistan because of some personal reasons, and I appeared for CSS in 2011. I passed it. I got allocated to Postal Service, but I decided not to join. In the meantime, I was also working as a research associate and adjunct lecturer at University of Central Punjab in Lahore as their youngest faculty member ever. I worked for a bit, and 2 saal baad, then I applied for an MBA program here in Germany from the University of Leipzig, and I got in. I completed my program. I was the valedictorian. Valedictorian is basically the gold medalist in Pakistani terms. And before I graduated, that's the connection with an internship. In my last semester, when I was writing a thesis, I did an internship as well. Jiska maine aapko bataya, Düsseldorf mein. Full-time internship for 6 months, getting paid 1,500 euros per month. And before that finished, यानी कि मैं graduate भी नहीं अभी हुआ और internship भी मेरी अभी चल रही है. I started applying, and at the end I got 3 job offers before I graduated. And because of that, I went straight from student status to a blue card. Blue card एक और काफी complicated सा topic है जो कि अक्सर इसमें group में discuss होता है, and there's a lot of rumors about a blue card जो कि which are false, and more on that later. ठीक है? अच्छा, so that's the first thing, internships and work student. ये आपके लिए it's very beneficial because बेशक जितना मर्जी पहले का experience है, फिर ये आपका थोड़ा सा Germany का experience जब आ जाए, तो then you appear as a very attractive candidate for your employer, for your prospective employer. Yeah, and I've been working here in Germany for the past 2.5 years, almost, and I'm on the verge of getting my permanent residence. इसका भी अभी आपको जब मैं blue card पे discuss करूँगा तो उस पे फिर मैं आपको बताऊँगा. अच्छा, and I see some questions like MSCS, University of Kiel. देखें भाई, मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि जो जनाब यहाँ पे अपने घर में बैठ के मैं आपको पूरी दुनिया का बताता फिरूँ कि भाई ये वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे ऐसे होता है. जो मुझे पता होगा वो मैं बताऊँगा. And quite honestly, I do not know about University of Kiel's MSCS program. ठीक है. एक चीज़ है जो चीज़ मैंने बहुत नोटिस किया ग्रुप में कि भाई हाँ जी, हमने टर्म में जो टेक्निशियस यूनिवर्सिटी मुंशन है वहाँ पे जनाब आईटी है, हमने वहाँ पे ही करना है बस. क्यों वहाँ पे क्यों करना है और उसके अलावा किसी और जगह पे क्यों नहीं करना? ये मेरा आपसे सवाल है. द थिंग इज कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं ना, पाकिस्तान में एक मेंटालिटी बनी हुई है कि जनाब आप लम से ग्रेजुएट करें तो आपको जॉब मिल जाएगी. अच्छा, ओके, आप आईबीए कराची से करें तो आपको जॉब मिल जाएगी. आप नस्ट से कर लें, आप एलएसई लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कर लें जनाब, तो आपके चांसेस हायर हैं जॉब के. This mentality does not apply in Germany. It is in the US. Of course, you graduate from University of Wharton, Pennsylvania, NYU, and ये वो जहाँ से Harvard से MIT से whatever. ठीक है, वो वहाँ पे भी है. But in Germany ये mentality नहीं है. ठीक है. They look at your entire profile. जब मैं कहता हूँ entire profile, इसका ये मतलब है कि वो आपका देखते हैं not just कि भाई आपने कहाँ से graduate किया. ठीक है, आपने मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया या आपने मुरीद के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया. रियली इट डजंट रियली मैटर. ठीक है, व्हाट मैटर्स इज कि भाई आपने एक डिग्री ली है, फाइन, आपका सीजीपीए ये है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपका जो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो कैसी हैं, जो कि एक आप ठीक है अपने सॉफ्ट स्किल्स से मुराद एक भी प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल्स, so anything that is not technical. ठीक है, वो आप रेज्यूमे पे तो आप अपने सारा लिख सकते हो, बट वो आपका प्रूव होती है when you're actually talking over the phone or you're talking on Skype or you're giving a personal interview. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा प्रोफाइल में आपकी फिर आती हैं वो एडेफाओ स्किल्स उन्हें कहते हैं. वो एडेफाओ कैंटनेस है which means basically IT skills. ठीक है, जर्मनी में this is my observation, I could be wrong. ठीक है, but from what I've seen is that there's a lot of demand for SAP modules, especially in the field of accounts and finance. So एक पहले शुरू में क्वेश्चन आया था accounts and finance का, तो it's a skill which is in
a lot of demand right now कि भाई SAP के modules, FICO, जो financial controlling का होता है, BI, business intelligence, BO, business objects, BW, business warehouse, ठीक है, ये ERP systems होते हैं, ठीक है, enterprise क्या था यार, enterprise relationship systems, whatever, ठीक है, you get the point. तो अच्छा, ये हो गया आपका जनाब जॉब के हिसाब से, ठीक है, तो they look at your entire profile. It doesn't really matter if you're a graduate of TUM, if you're a graduate of TUHH, if you're a graduate of I don't know, like क्या कहते हैं, Hochschule, Esslingen, Hochschule, Darmstadt. It doesn't really matter. As long as what you're bringing to the table is what the employer wants, then you're safe. Then you're still in the running. ठीक है. Oh, okay. Thank you, Aisha Khan, for enterprise resource processing. Oh, thank you. Something new I learned today. Because you always have to be open कि भाई बंदा हूँ डिक्शनरी या विकिपीडिया नहीं हूँ कि हर चीज़ मुझे याद रहेगी. But thanks again, अहमद राउफ साहब, आपको भी शुक्रिया, आपने भी बता दिया. अच्छा, इसका मतलब है ज़रा थोड़ी सी आप लोग दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं. That's good. अच्छा, apart from that is the fact that you should be willing to be open to Germans. ठीक है, easily, let's say, friendly. They take their time to get to know you first. They don't stab you in the back. अगर उन्हें कोई बुरी बात कहनी होगी आपके मुंह पे कहेंगे, मुंह पे कह के आपको कहेंगे हाँ भाई तुम ये गलत कर रहे हो, इसको ऐसा करो, and then they're not going to be like, oh देखो वो तैमूर है, वो ये करता है, तैमूर है, वो करता है. No, they're not going to be like that. Most of the time, since we're not totally stereotyping anyone here, ठीक है, किसी को stereotype भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि भाई वो जर्मनी है तो वो नाजी पार्टी से हैं, थर्ड राइक से हैं. No, please, ठीक है, be open. अच्छा, so let's come to the paradigm called a blue card. ठीक है, मेरे भाइयों और भाइयों की बहनों और मेरी भी बहनों, शादी हो चुकी है मेरी. So anyways, a blue card is nothing more than a work permit. ब्लू कार्ड PR नहीं होती. हम लोगों के जहनों में ये बहुत सी कहते हैं चीज़ें होती हैं, हम सुनते हैं जी हाँ वो अमेरिका में जी ग्रीन कार्ड है तो जी PR है, ठीक है, वहाँ पे है. आई हैव वन, बाय द वे, आई एम एक्चुअली अ परमानेंट रेजिडेंट इन द US एज वेल. अच्छा, तो ग्रीन कार्ड है जी तो PR है, तो जी जर्मनी में ब्लू कार्ड होगा तो जी वो भी PR होगी? नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट. ठीक है, जो ब्लू कार्ड है बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने एक ये सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो किया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन जर्मनी देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ IT एंड इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एंड मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट्स. ठीक है, उन्होंने दूसरे मुल्कों से whether third world countries or other countries from North America, South America or Europe, उन्होंने क्या किया कि भाई उन लोगों को उस मुल्क में अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम निकाली, समथिंग कॉल्ड अ EU ब्लू कार्ड. अच्छा, अब ये जो EU ब्लू कार्ड निकाला, ये so that means it's a blue card, तो इसका बड़ी कोई वर्थ होगी because it's not a work permit, it's blue card. कुछ भी नहीं है, वो ये कार्ड भी ब्लू कलर का नहीं है भाई. ठीक है, कार्ड वही है, वो आपका ऑफेंताल सीतल जो होता है ना पिंक और ब्लू से शेड में, वो ब्लू कार्ड भी वही होता है जिसमें लिखा होता है ना ऑफेंताल समथिंग व्हाटएवर. द रीजन जो लिखा हुआ होता है ना उसमें सब खुद देख नहीं, ओके सॉरी वॉलेट नहीं है इधर. अच्छा, तो जो ब्लू कार्ड होता है ना, इट्स बेसिकली इन एसेंस अ वर्क परमिट. ठीक है, विद सम एडेड बेनिफिट्स. एडेड बेनिफिट्स क्या हैं? एडेड बेनिफिट्स ही हैं कि भाई जो लोग शादीशुदा हैं या शादी कर रहे हैं ब्लू कार्ड लेने के बाद, उनके स्पाउसेस को A1 नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, क्वाइट सिंपल, वेरी इजी. वर्क परमिट वाले हैं जनाब, उनको उनकी बीवियों को या उनके मर्द हजरा जो उनके हस्बैंड्स हैं उनको A1 करना पड़ेगा कोई तो इंस्टीट्यूट से, और अपना वो पास करना पड़ेगा A1 एटलीस्ट. ब्लू कार्ड वालों को नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, बस टांगे पे चढ़ो और आ जाओ. अच्छा, ये हो गया. What's the next benefit? The next benefit is that it's a shorter path towards permanent residence. Meanwhile, a work permit takes a longer time for you to actually acquire permanent residence. How?
एक आप लोग जितने भी सुन रहे हैं 94 व्यूअर्स जो हैं, ओ 96 हो गए। तो आप लोग एक छोटा सा काम करें, गूगल पे जाके सिर्फ लिखें BAMF, ठीक है। In German it means Bundesamt für Flüchtlinge und Migration, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ठीक है। It's basically the equivalent of कह लें Ministry of Foreign Affairs कह लें, ठीक है, या Foreign Office कह लें, ठीक है। वो हर साल एक छोटी सी बुकलेट निकालते हैं जो कि मैं 3-4 दफ़ा अपलोड कर चुका हूँ इन PDF फॉर्म इस ग्रुप पे। इट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट कि भाई क्या क्या इनके वीज़ाज होते हैं, क्या क्या रेजिडेंस परमिट की जो टाइप्स होती हैं। अच्छा, नाउ अ ब्लू कार्ड अकॉर्डिंग टू BAMF, ठीक है, आपको जब ब्लू कार्ड मिल गया, आप जॉब पे लग गए हैं, जॉब आप कर रहे हैं, आपको जर्मन भी आती है B1 लेवल तक, ठीक है, तो आपको वो क्या करते हैं 21 महीने बाद, 21 मंथ्स बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस दे देते हैं, जिसको इधर जर्मन में नीडरलासुंग कहते हैं, या नीडरलासुंग एर्लाubnis उस कार्ड का नाम, ठीक हो गया। जर्मन आपको नहीं आती, आपको 33 मंथ्स बाद वो ब्लू कार्ड से परमानेंट रेजिडेंस दे देते हैं। फाइन, जर्मन आती है नहीं आती है, सो यू बेसिकली गेट इट बिटवीन 21 and 33 मंथ्स। फाइन, ब्लू कार्ड खत्म हो गया। दूसरी तरफ यू गेट अ वर्क परमिट। वर्क परमिट आपको मिलता है तो यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर 5 years। दैट मीन्स 60 months ऑफ कंसेक्यूटिव इनकम टैक्स एंड पेंशन, जिसे रेंट कहते हैं, पेमेंट्स इन जर्मनी, ठीक है। पेमेंट्स वो आप ब्लू कार्ड पे भी करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको पहले मिल जाता है। फिर आप मेरे से कहोगे यार आप तो कह रहे थे कि भाई कोई बड़ा कोई बेनिफिट नहीं है ब्लू कार्ड का और वर्क परमिट के, दोनों के दरमियान को अगर ब्लू कार्ड मिल जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं जा रहा। ठीक है, देखें, अब जो लोग यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, when they say permanent residence does not stop at you getting that Niederlassungserlaubnis या permanent residence card, वहाँ पे नहीं खत्म होती। ये खत्म होती है for most of us जब पासपोर्ट मिल जाता है, जिसको कहते हैं, जो पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका होता है उसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इट्स एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन आपकी तभी होती है जब आप जर्मनी में 8 साल रहे हो। जर्मनी में 8 साल रहने का मतलब ये है कि आप जब से जर्मनी में दाखिल हुए हो फॉर योर स्टडीज, फॉर योर मास्टर्स, ठीक है, और बैचलर्स, फाइन, ठीक है, आपको मिल गया, आपका वीज़ा वहाँ भी ख़त्म हो गया जब आपको वो आपका Aufenthaltstitel मिल गया, विच लिटरली मीन्स टेम्परेरी रेजिडेंस टाइटल, ठीक है, विच इज़ अ रेजिडेंस परमिट, ठीक है, albeit टेम्परेरी। तो वो आपकी ड्यूरेशन तब से शुरू होती है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, ठीक है, कि आपने जी एक जगह ब्लू कार्ड लिया हुआ है, एक जगह वर्क परमिट लिया हुआ है, ब्लू कार्ड पे आपने जनाब ओहो जी 2 साल का मास्टर्स किया, फिर उसके बाद जनाब जर्मन चलो थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी आती है, लेट्स से 2 साल बाद ही ब्लू कार्ड पे आपको काम करने के बाद परमानेंट रेजिडेंस मिल गया। दैट मीन्स आपको 4 साल बाद आपका जी परमानेंट रेजिडेंस मिल गई। जनाब आप बड़े खुश हो जी, क्या जी बात है, मेरे पास जी PR है जी, जर्मनी की PR। अच्छा जी, ठीक है जनाब। अच्छा, ऑन दी अदर एक बंदा है, वो 2 साल मास्टर्स में काम करता है, मास्टर्स में काम करने के बाद वो क्या करता है कि भाई उसे जॉब मिल गई, ठीक है, जॉब क्वालिफाई नहीं करती ब्लू कार्ड के लिए, तो वर्क परमिट मिल गया, ठीक है जी। अब वो 5 साल लगा हुआ है, 5 साल काम करके उसे फिर मिल रही है परमानेंट रेजिडेंस, सो दैट मीन्स इन अ टोटल ऑफ 7 years, ठीक है, 2 साल पढ़ाई के और 5 साल काम करने के, 7 years बाद ये PR मिल गई जनाब। अच्छा जी, मेरे भाइयों और बहनों, आपको पासपोर्ट 8 साल बाद ही मिलना है, PR आप बेशक पैदा होते साथ ही ले लो या 8 साल खत्म होने से 2 हफ्ते पहले ले लो, ठीक है। सिटीजनशिप बेसिकली मीन्स हैविंग द सेम राइट्स एज अदर पीपल हियर बोर्न इन जर्मनी, ठीक है, और वोटिंग राइट्स एंड स्टफ लाइक दैट, एवरीथिंग एल्स जो आपको वो मिल ही जाता है। परमानेंट रेजिडेंस में सिर्फ आपको थोड़ा सा आपका बेहतर हो जाएगा कि भाई आपको वो उसकी ड्यूरेशन जो लिखी होगी उसके आगे लिखा होगा unbefristet, यानी कि इट्स अनलिमिटेड, ठीक है। ग्रीन कार्ड जो आपको मिलता है वो 10 साल का मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। जो आपका Niederlassungserlaubnis है या परमानेंट रेजिडेंस जर्मनी में, वो आपको अनलिमिटेड मिलती है unbefristet, ठीक है। तो एक भाई हैं जिन्होंने 4 साल बाद परमानेंट रेजिडेंस ले लिया, एक भाई हैं जिन्होंने 7 साल बाद परमानेंट रेजिडेंस ले ली, ठीक है। दोनों को पासपोर्ट 8-8 साल बाद ही मिलना है टोटल, ठीक है, सिंपल इज इज दैट, ठीक है। अब फाइन, दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज जो आई नोटिस्ड एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस इज के ब्लू कार्ड वाले
दे आर ईजिली, किस तरह कहें, जैसे आप जाते हो जनाब, आपको एक जीटीवी बड़ा पसंद आया जनाब, मगर आपकी जेब में पैसे कोई नहीं है, ठीक हो गया। अब आपके पास जेब में पैसे कोई नहीं है, आपने टीवी लेना है, आप कहते हो यार काश ये फैसल इलेक्ट्रिक कंपनी जैसे पाकिस्तान में होती थी लाहौर में, वैसे वो किस्तों पे दे दें, ठीक है, किस्तों पे आपको मिल जाएगा। मगर अगर आप ब्लू कार्ड पे हो, वर्क परमिट वाले को वो नहीं देते इतनी आसानी से। इसका ये है कि मेरे एक दोस्त था, ही रिसेंटली मूव इनटू अ न्यू अपार्टमेंट, ठीक है, उसने अपने यहाँ पे अपार्टमेंट्स में अक्सर ये होता है कि आपको किचन नहीं लगे हुए मिलते। यस, ठीक है, कमरा बना हुआ है, सारे वो उस पर प्लग इन पॉइंट्स लगे हुए हैं कि हाँ जी यहाँ से गैस आती है जनाब, यहाँ से पानी जाता है, ये सिंक के लिए है, ये जनाब इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, ठीक है, बट आपको पूरी शेल्फें, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वो सारा अपना खुद इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड इट कॉस्ट यू अ लॉट, अराउंड 2500 यूरोस, ठीक है। अब वो 2500 यूरोस जब आपने पे करने हैं तो इट्स अ बिग अमाउंट, यानी कि भाई ठीक है हर बंदा कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, बट एकदम से 2500 यूरो निकाल के इट्स नॉट अ ईजी टास्क टू डू, ठीक है। तो उसने वो लेना था लीज पे कि जी थोड़ी सी डाउन पेमेंट और बाकी आई पेड ओवर 2 years, ठीक है, ओवर 24 months, जर्मन में 24 months, ठीक है। तो ही वॉजन एबल टू गेट इट, सो उसने क्या किया, फिर उसके किसी और के नाम पे उसने वो लिया। ब्लू कार्ड वाले हैं वो ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्लू कार्ड बला जो है, ये कैसे मिलती है और किसको मिलती है? सो भाई और बहनों, ये बहुत इजी सा इसका कह लो कि भाई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नंबर वन, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपको वर्क परमिट में मिलना हो, जो भी हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ही होगा, ठीक है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसमें वो देखेंगे अच्छा भाई आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी दो होती है, एक ग्रोस सैलरी, एक नेट सैलरी, ठीक है। उसे यहाँ पे ब्रूटो कहते हैं ग्रोस को, और नेटो कहते हैं नेट को। वो आपकी ग्रोस सैलरी देखते हैं कि भाई हाँ जी ओवरऑल आपका जो पैकेज है, जो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे वो कितने हैं। उसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, इंजीनियर्स, आईटी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, वो लोग अगर साल की ग्रोस इनकम एनुअली ही वो आपका उसमें लिखा होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई साल की इतनी इनकम, तो दैट मीन्स पर मंथ इतने मिलेंगे। अगर वो साल की इन प्रोफेशंस का जिनका मैंने अभी नाम लिया है 38,000 से ज़्यादा है, I don't know the exact figure for this year because it's updated every year क्योंकि it's based on 1.5% of the average income of a German individual, ठीक है। अच्छा, 38,000 यूरोज पर ईयर अगर उनकी ग्रोस सैलरी है तो उन भाईजान को, उन बहनों को वो मिल जाएगा ब्लू कार्ड। अच्छा, तो फिर जो बेचारे हम जैसे फाइनेंस, एमबीए, अकाउंट्स, सप्लाई चेन वाले, हम लोगों का क्या, और यार बेचारे लिटरेचर वाले भी हैं, हम लोगों का क्या गुनाह है भाई? अच्छा, हम लोगों का गुनाह ये है कि भाई जर्मनी में इन फील्ड से रिलेटेड उनके अपने बहुत ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको क्या ज़रूरत, जब मैंने आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये यूरोपियन यूनियन वालों ने निकाला ही इसीलिए था, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट दे आर गोना अट्रैक्ट foreign talent from other countries to their country by making the perks and benefits seem attractive for staying there permanently and stuff like that, ठीक है। तो हमारी सिर्फ ये गलती है कि भाई हम लोग एक ऐसे फील्ड से हैं जो कि जर्मनी में there are jobs for that but there's a lot of competition for that as well। तो हम लोगों के लिए ब्लू कार्ड हासिल करना 50,000 यूरोस पर ईयर से ज़्यादा सैलरी होगी तब मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप लोग मेरी सैलरी का नहीं से हिसाब लगाने बैठ जाना भाई, ठीक है। मूविंग ऑन, तो ये आपका हो गया ब्लू कार्ड एंड वर्क परमिट, ठीक है। अच्छा, अब टैक्सेस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टैक्सेस जो होते हैं वो भाई जर्मनी में बहुत टैक्सेस हैं, बट इन द बिगिनिंग आप कहोगे यार ये इतने टैक्स काट रहे, मेरे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा। ऑन द अदर एंड, थोड़ा टाइम जब आपका गुजर जाता है ना टैक्सेस देते हुए, आप जब थक हार के कहते हो नहीं यार अच्छा यार कुछ नहीं किया जा सकता, तो जब आप इसको दे देते हो ना, ये इस पे थोड़ा सा गौर करते हो, जब अपना ब्रेक डाउन देखते हो, आपकी जो पे स्लिप आती है उस पर लिखा होता है हाँ जी ग्रोस सैलरी ये थी, फिर ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, और फिर ये आपका बेचारा ये चूंगा जो आपको ये मिल गया। फिर आप कहते हो नहीं यार दिस इज ओके, नो व्हाई इज दैट ओके?
अच्छा भाई, कौन है जिन्होंने इतना ये प्यार भरा भेजा है? वो किसी ने फ्लावर भी भेजा, वो एक गुस्से भी हो गए हैं। अच्छा, एनीवेज, तो भाईजान जो गुस्से हुए वो अपने कमेंट्स पे लिख सकते हैं कि भाई क्या ऐसी मैंने आपको बात कर दी। अच्छा, एनीवेज, हाँ, बात हो रही थी टैक्सेस की। जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है ना बंदा जर्मनी में, वो होता है बेचारा कबारा। बेसिकली अ पर्सन हु सिंगल, he pays a lot of tax, almost as much as 40% of their monthly salary. ठीक है, मंथली सैलरी का जो 40% है, ठीक है, वाई इज दैट कि टैक्स इतना ज्यादा कि 40%? नहीं, ब्रेक डाउन कुछ ऐसे होता है। आपकी पेंशन इंश्योरेंस होती है, ठीक है, यानी आपकी पेंशन पेमेंट होती है, वो पैसे जो कि आपके पर मंथ ऑटोमेटिकली रेंट के काटे जा रहे हैं या पेंशन के लिए काटे जा रहे हैं, ठीक है, सो इट्स एन ओल्ड एज बेनिफिट, वो आपकी कटती है अराउंड, आई वुड से अराउंड कितनी, हाँ, 10%। ठीक हो क्या? एक बड़ा चंक जाता है अगर आप पब्लिकली इंश्योर्ड हो, वो जाता है अराउंड 14.8% ऑफ योर सैलरी एज हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, फॉर अ पब्लिक इंश्योरेंस। ठीक हो गया? किसी ये कमेंट्स बंद हो गए हैं, फाइन, एनीवेज, तो ये हो गया आपका टोटल ऑलमोस्ट 25%। उसके बाद आपकी जाती है इनकम टैक्स विच इज आई थिंक अराउंड 5%। उसके बाद जाता है आपका सॉलिडारिटी टैक्स। वो क्या बला है? वो ये है कि जब आप अगर वेस्ट जर्मनी में रहते हो तो इट्स अ स्मॉल टैक्स दैट यू हैव टू पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न जर्मन सिटीज, ठीक है, इवन दो दे डोंट नीड इट एनीमोर, बट स्टिल वेस्ट वाले पैसे देते हैं ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए। कोई पूछ सकता है कि जी क्यों, वो उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना होगा कि भाई बर्लिन वॉल, DDR, डोइच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि भाई दे वर फॉलोइंग कम्युनिज्म, USSR, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, ये वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज छोटी सी देते हो, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, बिकॉज आप लोग अगर यहाँ पे काम कर रहे हो, काम करते करते, ठीक है जनाब, कोई खुदा न खासा आपके साथ काम पे जनाब कुछ भी हुआ, तो एंड देन यू वर लेट गो, ठीक है, लेड ऑफ, तो उसमें ये होगा कि जर्मन गवर्नमेंट, जब आपने ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे की होगी, तो गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट आपको एटलीस्ट फॉर 3 months सपोर्ट करेगी विद योर एक्सपेंसेस, प्लस इट विल हेल्प यू फाइंड अ जॉब एज वेल, ठीक है। तो वो उसकी इंश्योरेंस, तो ऑल टुगेदर दिस कम्स आउट टू अराउंड 38-39% जो कि एक सिंगल बंदा पे करता है। उसको कहते हैं स्टॉयर क्लास 1, यानी टैक्स क्लास 1 में वो फॉल करता है। जो मेरे भाई बहन इधर शादीशुदा हैं, उनके लिए थोड़ी सी रियायत ये हो जाती है कि उनकी टैक्स क्लास चेंज हो जाती है जब वो दोनों यहाँ पे हों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं, आई हैड दिस क्वेश्चन कि भाई हाँ जी, मैं आई एम मैरिड, माय वाइफ इज नॉट हियर, तो मैं अपनी टैक्स क्लास चेंज कर सकता हूँ कि नहीं? नो, यू कैन नॉट। योर वाइफ नीड्स टू बी हियर एंड रजिस्टर्ड, ठीक है, अनमेल्ड उनको भी हो, तो फिर आप अपनी टैक्स क्लास चेंज करते हो। बट इनकी अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने नेक्स्ट ईयर जब आप अपने टैक्स क्लासेस देते, वो टैक्स क्लियर होती है अपनी, जो क्या कहते हैं, टैक्स क्लियरेंस जो होती है, जब आप प्रेजेंट करते हो तो उसमें दे काउंट द इंटायर ईयर। जैसे अब फॉर एग्जांपल माय वाइफ केम हियर इन मई, ठीक है, मई से मेरी टैक्स क्लास चेंज हुई, ठीक है, फ्रॉम 1 to 3, बट दैट मीन्स कि मैंने जनवरी से अप्रैल तक दिस ईयर आई पेड इन स्टॉयर क्लास 1 या टैक्स क्लास 1 में का मैंने पे किया, विच वॉज अ हायर रेट, ठीक है। अब होगा ये नेक्स्ट ईयर कि आई वुड बी रीइंबर्स्ड जो एक्स्ट्रा टैक्स मैंने पे किया फर्स्ट 4 months में, आई विल गेट इट बैक। वन मोर थिंग दैट इज गुड अबाउट जर्मनी इज कि अगर आपकी शादी दिसंबर में हुई है ना, यू बीन वर्किंग द इंटायर ईयर, आप पहली जनवरी से काम कर रहे हो, यू आर पेइंग टैक्स विद टैक्स क्लास 1, ठीक है, वो आप पे कर रहे हो फर्स्ट जनवरी से, एंड देन you get married, let's say on 21st 22nd December of that same year, तो नेक्स्ट ईयर आपका वो सारा पूरा साल काउंट होगा एज टैक्स क्लास 3, एंड यू वुड गेट दैट एंटायर सम जो कि आपने एक्स्ट्रा पे किए पूरे साल, वो आपको वापस मिल जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड यहाँ पे से एक ग्रुप में एक हैं यासिर इकबाल साहब, उन्होंने मेरी इस चीज़ में काफ़ी मदद की थी, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट टैक्सेस। तो
या तो ये हो गए आपके टैक्सेस। तो हमने बात कर ली इंटर्नशिप और वर्क स्टूडेंट पे, हमने बात कर ली ब्लू कार्ड एंड वर्क परमिट पे, हमने पीआर पे बात कर ली, हमने बात कर ली टैक्सेस पे, और क्या रह गया? नाउ लेट्स कम टू कमेंट्स। कमेंट्स उल्टे सीधे ये चल नहीं रहे। अच्छा, अच्छा जी, ये एमएल राउत साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई 1000 यूरोज अगर मैं अर्न कर रहा हूँ तो विल आई गेट 600 यूरोज? वेल इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, ठीक है। आई कैन प्रोवाइड अ लिंक जो कि ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट भी कर देता है सारा कुछ। बट द थिंग इज कि इफ यूर अ स्टूडेंट तो आपको थोड़ा सा इसमें बेनिफिट होता है। क्यों? जब मैं व्हेन आई वाज इंटर्निंग एट हेंकल, ठीक है, इट वाज अ फुल टाइम जॉब की तरह, ठीक है। तो when I was interning at Henkel, तो मैं I was earning 1500 and what I got was around 1100, तो तकरीबन 400 उसमें चला गया। The benefit for students is that कि the thing I talked about कि भाई 14.8 या 14.9% जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जाता है, वो for students वही 80 यूरोज जाएगा। वो नहीं कटेंगे आपके क्या कहते हैं, वो आपका वो 14.8% नहीं कटेगा, वो तभी कटेगा जब आप स्टूडेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट, वो आपके सिर्फ 80 कटेंगे, वो नहीं उतने कटते, ठीक है। तो आई कैन प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और व्हाटएवर कि उससे से आप कैलकुलेट कर लो। इट्स जस्ट सिंपल कैलकुलेटर, जस्ट यू पुट इन योर नेट अमाउंट और योर ग्रॉस अमाउंट एंड कैलकुलेट एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल आया हुआ है, व्हाट अबाउट अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स? अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स, हाँ, एक और चीज़ देखें, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में थोड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो ये है कि देखें भाई, जब आप जैसी एडमिशन लेटर आए ना तो आप लोग चले जाते हैं, भागते हैं डोइचे बैंक के अकाउंट की तरफ। आप लोग साइमल्टेनियसली एक काम क्यों नहीं करते? आपको जैसे ही एडमिशन लेटर मिले, यू अप्लाई फॉर योर रेजिडेंसेज इन स्टूडेंटन वर्क कहते हैं, हर सिटी का वो एक एक होता है, विच it's a small kind of very like a group or organization which actually controls um, all the dormitories in a city, ठीक है, for all students इन दैट सिटी, ठीक है। तो आप बेसिकली उसके लिए कुछ भी नहीं होता, आपने जाते हो उनकी अपनी रिस्पेक्टिव सिटी की स्टूडेंट वर्क पे, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके आपने कहना है हाँ जी, यू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल यूजली, अपनी डिटेल्स डालो, then you select up to three, normally I'm not saying it's the case with everyone, normally वहाँ पे 3 preferences देनी होती है कि हाँ भी हमारी ये dormitory इस तरफ है, ये इधर है, ये इधर है, इधर है। You just select it, you put it down, your first priorities, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। उसके बाद करने के बाद you upload your PDF of your admission letter, ठीक है, and then what they do is that they say okay fine, we've received your documents and what we're going to do now is that we're going to put you in a waiting list. So because पहले से भी तो स्टूडेंट्स रह रहे हैं ना वहाँ, वो कोई ऐसे तो नहीं है ना कि भी खाली पड़े हैं, ठीक है। So what they do is कि as soon as a room becomes available and they look at your preferences कि भाई हाँ जी इतना रेंट होना चाहिए इतने से इतना, and these are his preferences, okay fine, he's a good candidate, so they make you an offer, ठीक है। अब वो ऑफर जो आपको मिलती है, यू गेट टू एक्सेप्ट इट आफ्टर यू लैंड इन जर्मनी, but at least you, when you accept that offer, ठीक है, verbally कह लो, shriftlich या written कह लो आप, over email or over the respective website, you have an offer. It's not binding कि नहीं भाई हाँ जी वो मिल गई है उधर से तो हमें कोई जुर्माना हो जाए अगर वीजा ना लगाए वो। No, there's nothing like that. What happens is कि भाई आपके पास you have tentatively a place to stay, ठीक है, which is reserved by your name until a certain date. आप वहाँ पे जाते हो, जाके बंदे से स्टूडेंट में के मिलते हो, उसे you pay the caution, your basically caution means security, you pay your first month's rent and you move in and they're usually furnished. Fine, I understand कि कुछ लोगों कुछ cities ऐसी हो गई हैं कि वहाँ पे they don't really have places in student environment और उनकी student dormitories में places नहीं होती। वो इट्स आई अंडरस्टैंड इट्स अ लेजिटिमेट इशू। उसमें ये होता है कि व्हाट यू हैव टू डू इज, यार चाय ठंडी हो गई है। अच्छा, उसमें ये होता है कि फाइन आप अपने आप को वेटिंग लिस्ट पे तो डालो, एंड इन द मीन टाइम देयर आर यूजुअली सम प्राइवेट स्टूडेंट हॉस्टल्स, नॉट एवरीवेयर बट हर जगह काफ़ी जगहों पे होते हैं। लुक फॉर दैट। नंबर 3 इज देयर आर पीपल लिविंग, ठीक है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन योर सिटी, ठीक है। आप कोई बहुत ही कोई कोने खुदरे में छोटा सा कोई विलेज होगा जहाँ पे आप चले जाओ जहाँ पे आपको पाकिस्तानी ना मिले,
usually you find people everywhere, ठीक है? You look for that on groups. अब काफी लोग कहते हैं इमोबिलियन स्काउट या वेगे की ज़ुक एक वेबसाइट है, पर उसका थोड़ा सा मसला ये है कि ठीक है, उसमें एक चीज होती है बिजिस्टिंग होती है कि भाई आप जाते हो, आप जगह देखते हो, एंड इट्स नॉट यू जस्ट सेइंग हाँ भाई ये कमरा मुझे पसंद है, मैं ले रहा हूँ, नहीं। जो दूसरे बंदे होते हैं, ठीक है, वेगे का मतलब होता है डब्ल्यू, इट बेसिकली इट्स जर्मन फॉर डब्ल्यू जी, विच मीन्स वोन के माइनशाफ्ट, ठीक है, इकट्ठे रहना एज रूममेट्स, ठीक है। तो उसमें ये नहीं होता कि जी आप कहते हैं जी रूम मुझे पसंद है मैं ये ले रहा हूँ, नहीं, जो दूसरे लोग रह रहे हैं वो भी आपको देखेंगे, ठीक है, एंड देन दे विल चूज कि हाँ भाई इसको पहले ऑफर करनी है, ये नहीं कर सकता तो दूसरे को ऑफर करनी है, ठीक हो गया। तो वेगे गिजू का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, एंड प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफर्स दैट यू आर गिवन ऑनलाइन। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ जी हम जनाब ये हमारा जर्मनी में अपार्टमेंट है बट मैं इस वक्त इटली में या इंग्लैंड में हूँ, तो आप ऐसा करो कि आप पैसे तो ट्रांसफर कर देना एंड देन आई विल अरेंज फॉर यू टू गेट द की। नो प्लीज डोंट डू दैट, दैट्स स्कैम, ठीक है, वो आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। ओके, अकोमोडेशन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टूडेंट वर्क, एडमिशन लेटर मिलते ही करो। अच्छा जी, व्हाट्स द स्कोप ऑफ जी, यू नॉट टेल अबाउट द वर्क परमिट पॉइंट। वर्क परमिट पॉइंट की सिंपल सी बात है भाई कि आपने मास्टर्स किया ना तो आपकी सैलरी एटलीस्ट 32,000 या 36,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 36,000 से ज़्यादा अगर 38,000 तक है और आप आईटी इंजीनियर वगैरह में से हो तो आपको ब्लू कार्ड वैसे ही मिल जाएगा। अगर आप दूसरी फील्ड से हो, मैनेजमेंट की, सोशल साइंसेज की, तो वो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अच्छा, ब्लू कार्ड और वर्क परमिट का एक चीज़ कि भाई कितने लंबी देर तक होते हैं ये होते हैं आपका जो टोटल ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का प्लस 3 मंथ्स। अगर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो जी 1 साल 3 महीने का आपको मिलेगा, इधर वर्क परमिट और ब्लू कार्ड, ठीक है। 2 साल का तो 2 साल 3 महीने, 3 साल का तो 3 साल 3 महीने। नाउ इफ इट्स अनलिमिटेड वर्क परमिट जो होगा, आई थिंक इट्स ऑल्सो गिवन फॉर 4 years। ऑन द अदर एंड आई नो कि ब्लू कार्ड जो है आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो देन इट्स ओनली गिवन फॉर 4 years, क्योंकि 4 years में आप अगर काम करते रह रहे हो तो आपको वो ऑटोमेटिकली आप ब्लू कार्ड से पीआर तक शिफ्ट हो ही जाओगे, ठीक है। जर्मन आती है नहीं आती है आप शिफ्ट हो जाते हो, ठीक है। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्लू कार्ड फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई मैंने ब्लू कार्ड लिया हुआ है, मेरा अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो इट्स वैलिड फॉर 4 years। मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है वो 4 साल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द स्कोप आफ्टर इंटरमीडिएट इन जर्मनी? आई हैव नो आइडिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। यू जस्ट टोल्ड अस अबाउट द ब्लू कार्ड, आई डिड। वर्क परमिट का यही है ना कि भाई वर्क परमिट में यही है कि आपको यू हैव ऑलमोस्ट द सेम बेनिफिट्स एज अ ब्लू कार्ड, एक्सेप्ट है आपके स्पाउस को A1 करना पड़ेगा, आप कुछ चीज़ें लीज पे नहीं ले सकते, पीआर है वो आपको थोड़ी देर बाद मिलेगी आफ्टर 5 years। अच्छा जी, इज जर्मनी गुड फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू स्टडी बैचलर्स? वेल, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो दे हैव टू स्टडी इन जर्मन। द बैड थिंग अबाउट दिस इज दैट कि भाई वो सारी स्टडीज होंगी वो जर्मन में होंगी, दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर जर्मन, ठीक है। बैड थिंग अगेन इज ऑल्सो दैट कि अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होता तो आप जाके यूके में स्टेप नहीं, यूके में क्या होता है, यूएसएमएल क्या होता है यार, यूके में स्टेप्स होते हैं आई थिंक, एंड यूएसएमएलई जो होता है वो यूएस में होता है, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू स्टडी फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम किंग एडवर्ड, फ्रॉम फातिमा जिना या एनी अदर स्मॉल कॉलेज, तो आप उसको वहां से, क्योंकि बिकॉज दीज आर बेसिकली लाइसेंसिंग एग्जाम्स, ठीक है, आप वहां से पढ़ के आप कह सकते हैं हाँ जी मैंने यूके में जी प्रैक्टिस करना है, फाइन, यू गो टू द यूके और एटलीस्ट यू अप्लाई फॉर द यूके, आप उनके टेस्ट क्लियर करो, देन यू सेटल। आई हैव अ फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड इज एक्चुअली in the UK right now after medical. So for medical, fine. If you want to stay in Germany or the DACH region, DACH basically कहते हैं DACH, it's basically Deutschland, Austria and Switzerland. 3 countries जहाँ पे German is, well, the Muttersprache, the main mother tongue, ठीक है। उधर रहना है तो fine, it's good for you. Otherwise, आपकी सारी स्टडी जर्मन में है तो आपके पास कोई पेशेंट आ गया जो अंग्रेज है, क्या करोगे? फाइन, हम लोग जो है इंग्लिश इज आवर ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज इन पाकिस्तान, बट इट्स मेडिकल टर्म्स, कुछ आपको पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे, तो किसी को अभी मार मूर दिया तो भाई लॉ सूट हो जाएगा, फारे हो जाओगे। अच्छा जी, व्हाट्स नेक्स्ट? इफ योर सैलरी इज नॉट अबव 50K देन व्हाट? वो इफ योर सैलरी इज नॉट अबव 50K देन यू गेट अ वर्क परमिट फॉर मैनेजमेंट, फॉर इंजीनियरिंग एंड आईटी, यू स्टिल गेट अ ब्लू कार्ड। For business German students, languages must still be to, again, यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछेंगे भाई सर्टिफिकेट दिखाओ, आपको जर्मन बोलनी आनी चाहिए, आप सुन के उसको प्रोड्यूस कर सको, आप खुद लिख सको, ठीक है, टू अ सर्टेन लेवल। अगर आप कर सकते हो, गुड फॉर यू एंड यूर फाइन।
ठीक है. अच्छा, for working, I'm sorry about that. Working के लिए, as I mentioned before, maybe you came a little bit late. Um, German आपको आनी चाहिए. B1 level is fine. Now, लोग ऐसे भी होते हैं जो B1 level होते हैं and they cannot speak it. ठीक है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी they're A1, A2 and they can speak better than people who have B1. It's very simple. German is not my first foreign language. French was my first foreign language. ठीक है. I'm out of practice now, but I learned the language till a certain point, till B2 actually in the US. Or then I learned German. What I actually observed is that कि भाई language आपको बोलने से आती है. Language आपको ये नहीं कि आप किताबें बेशक देख लो जितनी मर्जी पढ़ लो ये वो. All you can do is you can increase your vocabulary, or you know how to make a sentence, or you know the grammatical structure, or you know okay, dare, d, does, or whatever the masculine, feminine, neutral words are. But the fluency actually comes with practice. ठीक है. So even if you're मेरे साथ ये हुआ था कि when I was going for my MBA, I appeared for A1 in Kuwait Institute in Lahore. A1 मैंने complete किया था, but I did not appear for the exams. I went to Germany. मेरा सारा जो students, जो मेरे दोस्त वगैरह थे, जो MBA था, it was all in English. It was not until when I was in Henkel कि जहाँ पे मेरे सर पे पड़ी कि भाई I had a friend who did not know any German, could only speak Russian, and who did not know any English. So basically she could only speak German or Russian. ठीक है. अब उसके साथ बात करनी होती तो बात अब जब करनी है तो भाई रशियन तो मुझे आती नहीं, जर्मन थी वो आती नहीं थोड़ी बहुत. तो 5 महीने 6 महीने उसके साथ बात कर करके when I actually joined my company said that okay fine, let's you want to take German lessons. I was like yeah sure, why not. Then उन्होंने कहा अच्छा भाई ये evaluation test लो. बर्लिट्स एक है, it's a private language school. पाकिस्तान में भी आई नो लाहौर में है एम वाला रोड पे. आई डोंट नो इन कराची और इस्लामाबाद. ठीक है. So we also have Berlitz here. So उनका मैंने evaluation test लिया and I was B1. मैंने A1 किया था 2013 में. ठीक है. And 2016 के शुरू में February में मैंने evaluation test लिया and I was B1. किस तरह ये फ्लुएंसी? मैंने तो कोई इतनी पढ़ाइयाँ नहीं की, सिर्फ बोल बोल के. ठीक है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिक मुझे बनाना आता था फ्रॉम A1. वोकैबुलरी मेरी बोल बोल के हुई, फ्लुएंसी मेरी बोल बोल के हुई. व्हेन यू एक्चुअली गेट टू हियर द वर्ड्स यू नो कि भाई उनको प्रोनाउंस कैसे करना है. और अच्छा तो भाई थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेटर में डुओलिंगो में कर आके आई वाज B1. ठीक है. एंड आई वर्क with German clients. I'm actually a manager on a continental level. So with Switzerland, Austria, and Germany, I deal in German. For France, UK, Switzerland, France, UK, Poland, Slovakia, Netherlands, France, Spain, and Italy, I deal in English. Okay, so B2 is okay, but if you're fluent, B1 is fine. Okay, without IELTS, is there any chance to get scholarship for MS? यार IELTS question पे मैं नहीं कहना चाह रहा because मैंने खुद IELTS नहीं किया, मैंने TOEFL किया था when I was going for my US studies and I was exempted from IELTS and TOEFL and all that. I did do my SATs, SAT जिसे कहा जाता है, उस बैचलर्स में किया था, good marks in that. I appeared for GMAT MBA के लिए, good marks in that. So TOEFL no, because and scholarship का एक चीज़ याद रखें कि जहाँ पे scholarship लिखी होगी ना कि भाई कि हाँ जी ये स्कॉलरशिप है, तो उसके नीचे रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है, उसको एक दफ़ा पढ़ लिया करें. How to get PR if we do not lie in the salary bracket of blue card economics? Are we allowed to work on work permit for 5 years on any salary? Well, masters करके जो आपकी salary they expect you is about 36,000 euros. ठीक है. 36,000 euros से ऊपर है, 50,000 से नीचे आप work permit पे काम करोगे. I have a friend here who is an economics and finance graduate, and he's earning around 42. Okay, I'm not going to say who or where does he work, but he works here in Frankfurt. He's earning 42,000. He's with a work permit, and he's fine. Sajid Bhai, do you know about scope for electoral? No, I do not know. Sorry, my apologies. I don't know. What is the process of marriage registration? The process of marriage registration. Alhamdulillah. Very simple. मेरी जब वाइफ यहाँ पे आई, I hope you're talking about मैरिज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे. ठीक है. मेरी वाइफ जब यहाँ पे आई तो उनको लेके मैं सीधा गया अनमेल्डिंग करवाने गया तो उनको कहा कि भाई
वो कहते हैं कि जनाब हमें जो है निकाहनामा ओरिजिनल दिखाएं, ठीक है, जो ओरिजिनल है, ठीक है, आपका निकाहनामा, और उसके पीछे एक मोहर लगती है जब आप फैमिली यूनियन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वो पीछे एक मोहर लगाते हैं निकाहनामा की बैक साइड पे, दैट इट हैज बीन सीन एंड वेरीफाइड दैट इट्स द ओरिजिनल, ठीक है, वो आपको दिखाना है। प्लस एक और चीज होती है हायराट्स और कुंड, ठीक है, इट्स अ जर्मन वर्ड फॉर मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे आते हो, अपना निकाह नाम है, किसी भी ट्रांसलेटर के पास जाते हो, वो ट्रांसलेशन होती है बेसिकली, वो आपको ट्रांसलेट करके देगा एंड देन ही वुड स्टैम्प कि भाई हाँ जी ये मैंने ऑफिशियल किया है, ये पीछे इसकी कहते हैं कॉपी लगी हुई है, फाइन। मैंने वो हायर सेकेंडरी दिया, मैंने निकाह नामा दिखाया, दैट्स इट। और वो मेरा स्टेटस भी चेंज हो गया, लीडिश से फिर हयात सिंगल से मैरिड, और मेरी मिसेज हैं वो अनमेल्डिंग भी हो गई उनकी, और उनका भी मैरिड में आ गया वहाँ पे। दैट्स इट, वेरी सिंपल, 5-10 minutes. Graduation will do from Germany or Pak. Graduation you're supposed to do from Pakistan. It's better, I would say, कि भाई वहाँ पे करो, करके फिर मास्टर्स के लिए यहाँ पे आओ ना, पहले पैसा इतना डुबाओ, ठीक है, आराम से आओ, इंग्लिश में मास्टर्स करो, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा बेहतर करो, एंड देन स्टार्ट वर्किंग हियर। प्लस पैसे लगाने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। Any idea about student hostels in Germany? 6 months waiting list. Studentenwerk. Studentenwerk की बहुत लंबी लिस्ट होती है, आई नो। लुक एट प्राइवेट स्टूडेंट डॉर्मेटरीज, वरना किसी भाई या बहन जो उस सिटी में है, नॉट ब्लड रिलेटिव्स बट आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, उनको आप कर दें, जनाब क्या कहते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लें। दे यूजुअली नो पीपल कि भाई हाँ जी कोई लुकिंग फॉर रूममेट, जैसे डार्मस्टाड में आई नो समवन हु इज लुकिंग फॉर रूममेट, 330 euros, अभी मैं पढ़ रहा था, वो दोस्त ही है मेरा, 2 bedroom apartment, and one apartment is free, 330 euros with contract, because remember with contract होगा तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा पाओगे, और रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे तो आपका आगे प्रोसेस चलेगा बैंक के लिए वो, ठीक है। सो नेवर एक्सेप्ट एनी ऑफर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, मास्टर्स फ्री, वो स्टडीज आर यूजुअली फ्री, बट फ्री का मतलब ये नहीं है कि भाई जीरो, फ्री का मतलब है कि भाई ट्यूशन फी जीरो है, सेमेस्टर फी होती है 200-300 euro पर सेमेस्टर। जर्मनी में सेमेस्टर्स 6 महीने के होते हैं, सो देर इज यूजली 2 semesters इन अ ईयर, ठीक है। देर इज अ विंटर सेमेस्टर एंड देर इज अ समर सेमेस्टर। समर सेमेस्टर जो वापस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 15 सितंबर को। जो विंटर सेमेस्टर है वो वापस शुरू होता है 1 अक्टूबर से और वो खत्म होता है आपका 15 मार्च को, ठीक है। सो दोनों की आपको सेमेस्टर फी आपको देनी पड़ेगी, just 200-300 euros, that's about it, not per month, per semester, ठीक है जी। अच्छा जी, Berlin की Studentenwerk, I have no idea my friend. Most account finance jobs are in Frankfurt, or there any state also? Good question. Finance accounts की jobs ये और या कोई भी और other jobs वो आपको पूरे जर्मनी में मिलेंगी। Course finance जो है, sorry, Frankfurt जो है, it's the main hub, it's the financial hub of Germany, or well now it's becoming the financial hub of Europe after Brexit, after London is out of the picture. But when you talk about finance or accounts, अगर आप बात कर रहे हो corporate finance की, या let's इसको भी निकाल दो, आप बात कर रहे हो जी banking की या investment banking की, then yeah, of course Frankfurt is the place for you. Otherwise, if you're talking about, let's say, because I myself am from a financial background, I'm basically well now I'm a market sector manager, but my background is financial controlling. So abhi bhi financial controlling mera bahut kaam hai. I do that as well as strategy. So if you talk about corporate finance or financial controlling or accounting or financial accounting, basically you can go anywhere in Germany because they're not all concentrated in one city. ठीक है, you go to Düsseldorf, क्योंकि बड़ी कंपनी जो यहाँ पे होती है ना, they tend to be in smaller cities. For example, क्योंकि बड़ी कंपनीज को चाहिए होती है ज़्यादा रकबा अपने ऑफिस के लिए and everything like that. So उनको जब ये चाहिए होता है तो what they do is that they go outside the city or go to smaller cities because then they would be paying lesser real estate rent या property वैसे भी वहाँ पे क्या कहते हैं सस्ती होगी, and they would be paying less taxes as well because metropolitan areas they have more taxes compared to suburban areas या rural areas, ठीक है। तो giving you an example would be, let's say, Bayer Pharmaceutical, ठीक है, पाकिस्तान में बायर BAYER, कराची में उनके ऑफिसेज हैं, बायर फार्मास्यूटिकल्स, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मर्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 आई वुड से, ठीक है। इट्स अ जर्मन कंपनी, इट्स बेस्ड आउट ऑफ अ सिटी कॉल्ड लेवरकूजन, कभी नाम सुना है पहले? ठीक है, लेवरकूजन इज अ वेरी स्मॉल सिटी इन बिटवीन डुसलडॉर्फ एंड
I don't know what's the other city, but Düsseldorf से थोड़ी सी दूर है. It's a very small city, but it's hub of buyer. For example, Adidas, ठीक है, सबने नाम सुना है, sports apparel बनाते हैं and all that. It's a German company. It's based out of, वो नाम pronounce करते हुए भी भाई 2 दफा पहले सोचना पड़ता है सही हो रहा है कि बिस्ती हो रही है. It's Herzogenaurach, ठीक है, इतना लंबा वर्ड है, ठीक है. It's a very small city, दूर है. Hugo Boss, another apparel, हर किसी ने नाम सुना हुआ है. It's a German brand based out of Metzingen, ठीक है. So that's the thing. When you talk about finance, or when you talk about FMCG or big companies or Siemens or something like that, they're not based out of very big cities. Investment banking, Frankfurt. Everything else related to finance, everywhere else in Germany. Ajay, can I ask a visa-related issue? Sure, yes, fine. Bilkul, zarur. Scope of Pakistan CA in Germany. Thanks. Aisha, the scope of CA is that, okay, if you can manage to learn the language, because accountancy is again a field जिसमें it's very German intensive, ठीक है. Debitoren, Kreditoren, Buchhaltung, it's primarily German. I mean, of course, you would need English in that, but it's more German than English. ठीक है. So if you can get over that, then yeah, of course, there's a lot of scope. Yes. ठीक है. Accounting में they always need people. ठीक है. I work with the accounting department myself. तो उसमें, and there's a lot of women in there. अच्छी बात है. एक कमरा है उसमें there's about 8 women and they're all accountants. ठीक है. And that's basically it. So there's a good chance for you if you know German and you have accounting skills. Definitely. How a student says Mr. Go for internship, like what steps to follow. For internships, for work students, for looking for a job, note down this website. Indeed, 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 जैसे English का word होता है ना, Indeed.de. Very simple website. When you go there, 2 fields नजर आएंगी, ठीक है. Was and wo. Was का मतलब होता है German में what, and wo का मतलब होता है where. ठीक है. Leave wo out. उसमें कुछ नहीं लिखना. आपने was वाली में लिख दो कि आपको क्या चाहिए. Internship, engineering. Very simple keywords. लिखो आपको. It's basically a search engine for jobs. It works like Google. You don't have to make any profiles or anything like that. But you just type it in and it will give you all the links कि हाँ भाई ये companies हैं, उधर ये सारा कुछ open है. Click करोगे, directly company के page पे चले जाओगे. No profile, login, no nothing. Use that. I myself use that. Other than that, make sure you have an active LinkedIn profile. Make sure you have a active Zing profile. And if you're an accounts and finance guy, usually you should have a stepstone.de profile as well. Is there any B2 plus C1 German course? Do you suggest any books which offer it? I would suggest कि भाई आपने German learn करनी है, so better do it from an institute. ठीक है. If you actually learn it until B1 from Pakistan, good enough. But I think इस step से आगे जाने के लिए एक second दीजिएगा. अच्छा जी. इस स्टेप से आगे जाने के लिए आपको यू नीड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज और कितना आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगी, ठीक है. एंड सीरियसली पाकिस्तान में आप किसके साथ जर्मन बोलेंगी, ठीक हो गया. सो B2 प्लस C1 पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, बट कम हियर, ठीक है. एक चीज जो है वो लोग अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि भाई जर्मनी जाके जी हम जर्मन कोर्स करेंगे. भाई यहाँ पे मुफ्त नहीं होता. जितने पैसे पाकिस्तान में लग रहे हैं उससे ज्यादा पैसे आपको यहाँ लगेंगे, ठीक हो गया. आपने यू कैन एक्चुअली आर्ग्यू हाँ जी नहीं तो वो तो जो यूनिवर्सिटियाँ फ्री कोर्स करवाती है. नो, सारी यूनिवर्सिटी फ्री नहीं करवाती. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फोक्सहॉगशूले, ठीक है. इट्स एसोसिएटेड विद द पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ दैट सिटी. वो ऑफर करती है ये सारे कोर्सेज, इंटेंसिव कोर्सेज, वीकेंड कोर्सेज, इवनिंग कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज में ना. बट दे चार्ज यू लेट्स से अराउंड 200 to 300 euros, ठीक है, फॉर एन वेरी इंटेंसिव कोर्स, 4 hours per day, 5 times a week. For 5 months, for 5 weeks, they actually charge you 310 euros एक मॉड्यूल के लिए. और वो A1 को सिर्फ A1 नहीं कहते, वो A1.1 होगा, फिर A1.2 होगा, फिर A2.1 होगा, फिर A2.2 होगा, B1.1, 1.2, B2.2, 2.1, इस तरह करके, ठीक है. तो वो हर मॉड्यूल को ब्रेक डाउन करके उसके
पर मॉड्यूल पैसे लेते हैं. सो इट्स बेटर कि भाई B2 या B1 तक पाकिस्तान में करो, उसके बाद यहाँ पे रख करो. What is the chances of getting visa if someone got admission on proficiency? Yeah, देखो, it's always been it's always been a hot topic. क्योंकि I always believe कि if you're able to get a language proficiency letter, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने आपको exempt कर दिया, then the embassy should exempt you too, ठीक है. But हुआ ये है कि जब मैंने अप्लाई किया था 2013 में, I did not need TOEFL or IELTS because I had a US degree. ठीक है, it's an international law. If you've studied for more than 3 years in a country where English is the mother language, ठीक है, or mother tongue, you're exempted. ठीक है, based on that, ना embassy वालों ने मेरे से पूछा, ना यूनिवर्सिटी मेरे से IELTS का पूछा. ठीक है, nowadays since there has been an influx of Pakistani students in Germany, तो वो German जो embassy है, what they do is they're like कि भाई किसी तरह इसको, जैसे population control होता है ना, तो आप ये कह लो ये student control हो गया कि भाई अब वो अपनी सारी जो requirements उनको tough करते जा रहे हैं. I never heard of anyone who got rejected for a visa when I was applying. और मैं कोई बाबा आदम के ज़माने में अप्लाई नहीं किया था. 2013, आज से 4 साल पुरानी बात है. ठीक है, वही 28 days का processing time होता था. Everyone I knew from Qureshi Institute was coming here for a master's. They all got accepted. ठीक है, सबको 28 days में मिला, सबको single year Deutsche Bank की मिला. और मजे की बात यह है कि अब आप लोगों को यहाँ पे फिल करके जनाब उधर हैम्बर्ग या लाइप्जिग भेजना पड़ता है एट दैट टाइम. और हाँ, यहाँ पे आपको जी अटेस्ट भी करवाओ एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से, वो उस टाइम कुछ नहीं होता था. उस टाइम क्या होता था, जनाब फॉर्म है, हाँ जी फिल किए हैं जनाब, आप डोइचे बैंक चले जाओ अवारी लाहौर में, या आप कराची या इस्लामाबाद, दे हैव दीज 3 ब्रांचेस. वहाँ पे जाओ, वो उसको टेस्ट करते हैं, जनाब पकड़ो हैम्बर्ग भेजो, अकाउंट खुल गया. ठीक है, अब उन्होंने वो स्टूडेंट्स की, अब इतने लोग, जब लोगों को पता चला कि भाई जर्मनी में एजुकेशन मुफ्त है, भागो. उसमें कुछ लोग वाकई हैं जो कि वाकई पढ़ना चाहते थे, लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज एंड दे ब्रिलियंट. ठीक है, कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से भाग के दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं और जर्मनी को यूज करते हैं एज अ वे थ्रू बिकॉज ऑफ द लीनियंट क्या कहते हैं वीजा, कह लो कि भाई एक्सेसिबिलिटी, कि भाई हाँ जी यहाँ से जर्मनी से आगे हम जी इटली या पेरिस फ्रांस निकल जाएंगे, क्योंकि ये 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको असाइलम यूँ मिलता है. ठीक है, आप वहाँ पे जाते हैं. आई पर्सनली नो सम पीपल जो कि इटली में रहते हैं, बल्कि इटली में भी रहते हैं. इटली में सबसे आसानी से मिलता है, फ्रांस में तो उससे इट्स अ बिट मोर हार्डर फॉर पीपल टू गेट असाइलम इन फ्रांस देन इन इटली. तो लोग क्या करते हैं, इटली जाते हैं जनाब, साल 2 साल का वो अपना जो कार्ड होता है वो अपना बनवाया, बना के फ्रांस आ गए. ठीक है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स इटली से ले रहे हैं, इधर आके जनाब किसी रेस्टोरेंट में जनाब 2 नंबर तरीके से काम कर रहे हैं. ठीक है, इधर से भी पैसे आ रहे हैं, इधर से भी पैसे आ रहे हैं. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्वीडन, आपको शायद किसी को यहाँ से बीच में पता हो, स्वीडन वाज ट्यूशन फ्री एट वन पॉइंट. अब वहाँ पे ट्यूशन फी है बिकॉज लोग उसे एज एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं. हाँ जी, यहाँ से पाकिस्तान से स्वीडन गए, स्वीडन से जी गायब हो गए, किधर गए नहीं पता जी, शेंजन एग्रीमेंट है नहीं, क्योंकि लिटरली यहाँ पे आपको यू डोंट नो व्हेन यू क्रॉस फ्रॉम वन कंट्री इनटू द अदर. ठीक है, अच्छा, so I'll try to answer as much as possible. Is there same opportunity in winter and summer intake, or if it's no, there's no difference, it's the same thing. विंटर में there's more students because लोगों की डिग्रीज होती है वो जून में खत्म हो रही होती है, तो लोग, हर बंदा कहता है कि भाई गैप कम से कम हो और सितंबर में हम लोग या अक्टूबर में चले जाएं. So there is more competition in winter than in summer, but requirements are the same. They process you for as the same candidate. ठीक है, which one is better for bachelor's in international business, ESV business school, or HBR Berlin? I don't have any idea. I'm sorry about that. What about Italy, bro? Italy. The only thing I can talk about for Italy is the fact that it's very beautiful. ठीक है, Rome गया हूँ, Venice गया हूँ, very nice. Other than that, I don't know much about Italy except that कि भाई पास्ता तो वहाँ का अच्छा है, मगर पिज़्ज़ा खाओगे तो वो पिज़्ज़ा तोल के देते हैं. Yeah, new thing for you. I was in Rome. आप जाओ, कहो हाँ जी इसका पीस, ये उन्होंने बना के रखे हैं कि भाई हाँ जी इसका पीस काट दो, हाँ जी पीस काटा जनाब, वेइंग मशीन पे रखा, टक टक टक, हाँ जी इतने पैसे दे दो पर स्लाइस, आपका वेट करके आपको वो देते हैं. एनीवेज, नॉट एवरीवेयर, ठीक है, बट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. सॉरी, दैट्स ऑल आई नो अबाउट इटली.
ठीक है. हाउ मेनी बैंड रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन इन जर्मनी डिपेंड्स ऑन द. देखो यार, इतने जनरल क्वेश्चंस ना किया करो, ठीक है. मेरा दिमाग जो है ना वो फटता है और मेरा खून खौलता है जब लोग कहते हैं जी ओह यस आई डिड बैचलर्स, तो मैंने जनाब जर्मनी से, मुझे बताओ. भाई मेरे ऊपर एक पिन पोस्ट है, उसको पढ़ लो. इसी तरह वीजे के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, एम्बेसी की वेबसाइट पर लिखा है, पढ़ लो. उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं समझ आएगा, मैं हूँ, ठीक है. ये पूरा ग्रुप है, मेरे जैसे और बहुत ज्यादा, मेरे से बेहतर इस ग्रुप में और ज्यादा है, ठीक है. तो वो आपको बताएंगे. So yeah, IELTS bands जो हैं obviously aim for as high as possible. Aim for 8 bands, 8 plus bands, ठीक है. उसका aim करो, तुम 6 ले लो, 6.5 ले लो. But on the other end, if you happen to score 6.5, I would say you're on the safe side, ठीक है. But more is better because it's the same thing. भाई GI में 300 ले लो, 318 ले लो, 320 ले लो, कौन सा बेहतर आपको लगेगा? 320 वाला, because he has more marks. यहाँ उसके मार्क्स ज़्यादा ही है, ठीक है. एनीवेज, आई एम सॉरी अगर मैं इसमें आपको कुछ और ज़्यादा नहीं बता सका. मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, बैचलर के लिए क्या करना चाहिए? बैचलर आपको पाकिस्तान में करना चाहिए और थोड़ी सी इंग्लिश को बेहतर करना चाहिए. व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर डॉक्टर्स? ओह, डॉक्टर्स जो कि अपनी स्टडी वहाँ पे कर चुके हैं, प्लीज डोंट कम हियर बिकॉज आपको आपके सारे लाइसेंसिंग एग्जाम जो है सारे जर्मन में लेने पड़ेंगे एंड दे रिक्वायर यू टू हैव एटलीस्ट C1 to C2 लेवल जर्मन. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट फिर आप जब ये कर लेंगे तो यू शुड नो ऑल द मेडिकल टर्म्स in German as well. ठीक है, you would know it in English, but you would need to know in German as well because not everyone speaks German here. ठीक है, not everyone speaks English here. Sorry, my bad. ठीक है. So for you, if you or have already completed your MBBS and you're doing your house job, yeah, आप specialization में जा रहे हो, I would suggest you to either look for UK because I know people in the, well, not people, one person in UK who's actually working there and he's earning good money and even though things are not that good in the UK, but he's living, he's earning. ठीक है, वहाँ पे आपने वो, यार I think it's steps ही होते हैं, yeah, fine, steps होते हैं I think, उनको आप करो and then do it like that. और USMLE आप अगर कर सकते हो, उसके तीनों उसके levels कर सकते हो USMLE के, so I think the first and second you have to give it in Pakistan, and for the third you have to go to the US. Do it if you can. I'm a US green card holder. I've lived for 10 years. I know a lot of Pakistani doctors and they're earning a lot. It's one of the highest paid professions. Actuarial sciences, वहाँ पे बहुत ज़्यादा pay करते हैं, and then the doctors. So I would suggest UK and US is a better option for you. Is it necessary to learn German to get admission in German university? No, it's not necessary unless it's required to read the requirements. China civil engineering का के लिए ठीक है भाई, कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, so शिशे. I've seen a post stating some telecom companies posing issues for people having Pakistani passports. Are you aware of any such issues? Also, which telecom provider would you recommend, and how long do they take to activate your SIM card? I know what you're talking about, Sam. मैंने अभी ये थोड़े दिनों पहले ये इसी ग्रुप पे या किसी और ग्रुप पे मैंने ये पढ़ा था. So far I had no issues for 4 years, मुझे कुछ नहीं हुआ, and as a matter of fact मैंने अभी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करवाया है, and I got my wife a new contract, so she had a Pakistani passport and yeah, no such issues. The other thing is that if you are a student and you want to stay on a prepaid, ठीक है, तो देन ये जो छोटे छोटे हैं ना आपके बेस मोबाइल, Aldi Talk, Lidl वालों का है, so these are much better because then what you can do is कि भाई आप उनको लोड करवा सकते हो. और even O2 जो है, it basically depends how your circle is like. अगर आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स जो दोस्त हैं यहाँ पे आके they're using O2, then O2 का आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप बीच में ज़्यादा बात करो. बट आजकल के ज़माने में कौन करता है यार, व्हाट्सएप की कॉल नहीं है वो. O2 का इस वक्त पैकेज आया हुआ है कि भाई यू गेट 1 टेराबाइट, नॉट 1 टेराबाइट, सॉरी, 1 गीगाबाइट फॉर €9. ठीक है, पर €9 का उसमें लोड करवाओ, 200 मिनट्स हैं का, 50 या 100 SMS हैं एंड 1 गीगाबाइट है उसमें आपको अलाउड. ठीक है, और हर जगह पे वाईफाई है, तो आपने बेसिकली इफ यू गो आउटसाइड यू जस्ट दैट्स व्हेन यू यूज योर मोबाइल डेटा, अदरवाइज यू यूज योर वाईफाई. सो आई थिंक if you're looking for 10 to 15 euros, anyone would do. Vodafone is a bit expensive, but O2 fine. Okay, it's a major telecom provider, should be okay. Okay, I hope that answers.
Is work experience of 2 years compulsory for DART scholarship? I'd like to apply for MS in engineering. Again, आप अगर वो इस्लामाबाद DART की website पे गए और आपने देखा है, so they usually have scholarships for young professionals. ठीक है, young professional का मतलब यही होता है कि 1-2 साल का work experience. However, अगर आपको like it basically depends on what the scholarship is like and what the requirement is, and it would be written over there. So the website is ic.dart.de, I think, or just type Islamabad and Dart in Google, and it'll take you to that website. और उनका इस्लामाबाद में दफ्तर भी है, so either call them up or just search the website and you'll get answers to your questions regarding Dart scholarship. I've done masters in 2000 and can I get student visa and can I take my family there? Need to know chances of admission is business administration. If you did your masters in 2000, then that means you must be around 40 or well late 30s, man. And there is a very low chance for you to get a student visa because of the fact that they would look at your age, even though age is just a number. In my MBA, I was the third youngest one. At 26 years old, I was the third youngest one. The oldest one was 38 years old. Okay, so it's not really, it's just a number, but based on कि भाई Pakistan में जो German embassy है, they're very critical nowadays, so they're just looking for reasons to reject people. You can try, there's no harm in trying. I always say आप try करो, ठीक है, and बाकी अल्लाह ताला पे आप छोड़ दो, ठीक है. Or if you believe in some other God, then if you believe in a higher power, it's good for you, ठीक है, उस पे छोड़ दो, and then believe in yourself और अल्लाह ताला पे, ठीक है. Lose? Or do you mean loser? Saying to himself, fine, yaar, aap jeete, main hara. Or if you don't mean that as an insult, well, thanks anyways. Which language course do you suggest for camps such as Beruf, Bitswai, oder DTC? I would suggest, देखें आपका, when you come here, they don't ask for हाँ जी certificates दिखाओ कि आपने ये किया है, ये किया, ये किया. No, you don't need that. ठीक है? They check your language skills in an interview, or आप अपने resume पे जब लिख देते हो कि भाई I know it will like that, you know IFRS, you know US GAAP, you know German IFRS or German GAAP होता है, German IFRS. ठीक है, आपको ये पता है, fine, they trust you on that, and then when they have the interview, they will see कि भाई हाँ जी क्या आता है क्या नहीं आता, इसी conversational skills कैसी हैं German में, English में, ये वो, they judge you on that because they have no other way of finding out, ठीक है, and they don't ask for certificates like in the US or Pakistan. You get very informative, man. Thanks a lot for your effort. Thanks, man. Manitar. Hassan Asghar, thanks Mike for answering. Is it important to apply the documents in German or in English? I am computational engineering student. IT की ज़्यादातर jobs होती हैं वो English में होती हैं, and it basically depends. ठीक है, इसका आपको, you have to be the judge of that, because if the working language आप जिसमें काम करने जा रहे हो, if it's English, उसकी requirements English में लिखी है, सब कुछ लिखा है, then of course it makes sense to apply in English. However, on the other end, अगर आपको लिखा हुआ कि हाँ जी सारा में Aufgabe कि भाई was in where, was beaten where, and ये was कि भाई हम कौन है, हम क्या चाहते हैं, ये वो, if it's all in German and if the language is not, the requirement is not English, ठीक है, नीचे लिखा होता है Deutsch Kenntnisse, English Kenntnisse कि भाई होनी sehr gut English Kenntnisse, ये वो, तो you can apply in either German or English, ठीक है. But if it's just German, then it's just German. If it's English and German, then it's both. Or if it's English, then it's English. Okay? The context, the content of that advertisement, it tells you everything. Okay? I have 1 year experience of teaching and 1 year field experience. Will that count teaching experience? Also just field experience? Well, any experience is experience. So I would say go ahead. Asma Sattar. That's absolutely fine. And it also should relate to your field in which you're applying. Okay? Tayyab, hello. Oh, hello. Yo, Richard is watching. Thanks for providing information. Shazzy, which level have you done? Will it be okay if I PM you for language and accountancy? Fine. No problem. Say Jawadi, hi Taimoor. Hi Jawad. What is better to do? German language in Germany with university pathway program, fast track, and which student calling in German language held in 1 year? Then what is better for bachelors? No idea, my friend. As I said before, I'm not going to answer you if I don't know anything about it. Okay, so I'm very sorry about it. Last question, is a German master's degree work in fields of finance accounts? As USA China, it's also hub for finance. Lastly, PhD के लिए apply करने चाहिए or just move your career in field work? Again, it's a matter of personal choice.
for myself, I never wanted to do more research work. I was offered a PhD position after I had finished my MBA in the same department, and the director of that program wanted to be my supervisor. I said no because I do not see myself as a PhD or a researcher. So that's why I went for an MBA. Meanwhile, on the other end, I know a lot of people who did their MSCs or in their MBAs, and now they're going for doctorate programs. For them, it's fine. Okay. So that's for PhD. It's basically a personal preference. If you want to do it, if you feel like do it, do it. If you don't feel like do it, then don't bother. Just move on in your career and start earning. Well, actually, PhDs earn as well, but well, anyways, that's another debate for another time. Any advice for fresh graduates who came to Germany for masters, no experience? All internships I see on Indeed wants to require experience. I don't even know why I should make a LinkedIn. Please comment briefly. Thanks, brother. Talha, the thing is that you have to start somewhere. Okay, you start from scratch. No one started with a level that's here. They all start from scratch, right from the table, right from the floor. Okay, people with no experience get internships as well. Okay, it's just that you have to look hard and don't be afraid if you get rejections. I was rejected. I already had 5 years of work experience before I actually started applying for internships. 3 years in the US, 2 years in the US, 3 years in Pakistan. Okay, in investment banks, and I'm a graduate from a very good university in the US, NYU. So I was still getting rejections. Okay, fine, no problem. I got 12 rejections, and then the 13th one, it hit the spot, and it was better than the last 12 ones. Okay, so you just have to trust in yourself and just keep on applying because it doesn't hurt. It's free. So just take some time and apply for it. Okay, fine. Of course, you have to find well, for internships, they don't really require experience. But you can share it with me. ठीक है, हम उसको we can counter it together. So, thanks for your session. Question: what is the minimum GPA requirement for admission in MS schools? Currently, I am in 30 computer. The CGPA requirement should be mentioned on the website of that program. If it's not, then of course it's better to have a better GPA than a bad GPA. ठीक है तो and obviously you might know कि भाई हमारा होता है कि भाई हाँ जी 4.0 से is the highest, either 1.0 is the highest, so they travel in opposite directions. So if your GPA is 2.5 or better in the German system, basically that means let's say 3 to 4 CGPA in Pakistan, that's considered good. So aim for that. Well, aim for as high as you want, but yeah, please tell me about MA or MBA, human resources. Well, if you do not have 3 years of work experience, then no MBA for you. There is one university which is HS Anhalt or Anhalt, and it's not that good, I would say. But again, I would be contradicting myself अगर मैं कहता हूँ कि नहीं वो बुरी है वो अच्छी है. But the thing is, it's an MBA. There's a principle behind an MBA. MBA is not a theoretical degree; it's a professional degree designed for professionals. And the average age of a student who should be doing an MBA is around 26, 27, 28. ठीक है इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो 21 पे ग्रेजुएट होके उसके बाद वेला नहीं बैठा उसके बाद काम करता रहा है एंड देन ही इज जॉइनिंग इट फॉर फर्दर करियर प्रोग्रेशन. हम लोग ये करते हैं कि भाई हाँ जी बैचलर्स किया है जी बीबीए में जून में ग्रेजुएट है जी सितंबर में एमबीए में कर लेना है. ठीक है that's why पाकिस्तान में MBA की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है that's why you don't get internationally accredited programs in Pakistan. For example, there's 3 biggest जिसे कहते हैं 3 star कहते हैं या क्या कहते हैं I forgot, but it's basically AASCB या AACSB एक organization है जो accredit करती है accreditation देती है MBA programs. So there's AMBA, there's EQUIS, EQUIS. ठीक है ये 3 है देयर इज द हाईएस्ट रेटेड इन द वर्ल्ड. ठीक है ये आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा जी बीबीए किया इधर एमबीए किया, लम्स ने ऑप्शनल किया हुआ वर्क एक्सपीरियंस, आईबीए कराची ने कहा कि नहीं भैया उसमें चाहिए तो तुम आपको आने देंगे एंड देन दे हैव अ रीजन फॉर दैट. ठीक है क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस करोगे. नाउ दैट्स द सेम क्वेश्चन. आई जॉइंड माय firm. ठीक है इधर मैं जब काम शुरू किया I had already had accumulated 5 years of work experience in Pakistan and in the US. ठीक है I know someone who did his MSc. ठीक है
and he was a fresh graduate and he was expecting कि भाई उसकी जो सैलरी लगेगी वो ही मेरी सैलरी होनी चाहिए या जो मेरी सैलरी होगी वो उसकी होगी. No, that there's a big difference. He's a fresh graduate and MBA is supposed to have professional experience before he goes into the corporate world, and he's even supposed to have experience even before he joins an MBA program. Okay, so that's the thing. If you do qualify, then I would say, yeah, go for an MBA. But I would say if you're fresh or young professional, okay, 1-2 years of work experience, and then or you don't have any, go for an MSc. You'll save a lot of money that way, and then at the end, you're still going to be in the graduate training program. या entry level position पे आप जाओगे, which आप MBA के साथ भी जाओगे, but MBA में आप पैसे दोगे, ठीक है? And it's not पाकिस्तान के लिए MBA है तो ये उसको जॉब मिलेगी, MSc तो नहीं मिलेगी. No, don't think about it. ठीक है, उस्मान, keep your CGA between. अच्छा भाई भाई ने किया. Thank you. What is the limit of working hours per week as work student during semester? As work student, you can work for 20 hours per week. 20 hours per week. Yep. I already did a master's from Germany. It came back 2 years ago. I think it came back 2 years ago. Now I'm gonna apply for a visa for another intake, but different field. Does the best will make an issue? Why another master's again? That's another sensitive issue based on the fact that वो आपको देखते हैं कि what's your overall profile. If you're masters and you've been working, and then you after 10 years आपको याद आता है कि यार एक और masters कर लें, then the embassy will create an issue. But let's say if you're able to justify if you're able to justify कि हाँ जी मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि career progression के लिए, या I want to experience it, or blah blah blah, there could be 100 reasons, then there's a chance. Otherwise, if you're too late, then no. But in your case, if it's 2 years ago, then I don't think there's a problem. But if you're going for a second master's, then they might start to doubt you कि भाई पहली दफा भी तो गए थे, जब वो पढ़ लिया तो अब ये फिर दोबारा पढ़ने के लिए जा रहे हो. But try your luck. There's always a trial method. ठीक है, आप hit and run, well, not hit and run. Yeah, hit and run. Yeah. Taimoor, I know a company in Germany who will give me the job once in Germany, but I don't have IELTS in German language. What should I do for a blue permit from here? Does it work from? Yeah, of course. You apply. Basically, Germany आने के लिए आपको हमेशा से आप हमेशा वीजे पे आते हो. आपको यहाँ से जॉब मिल जाती है पाकिस्तान में बैठे बैठे, तो आपको यहाँ पे पहले वो वीजे पे ही बुलाएंगे. वही 3 months का वीजा, ठीक है. आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके उसको आपको वो ऑफेंताल्स टीटल में कन्वर्ट कर देंगे. ऑफेंताल्स टीटल आप स्टूडेंट हो तब मिलता है, ब्लू कार्ड हो तब भी ऑफेंताल्स टीटल ही मिलता है, वर्क परमिट पे तब भी ऑफेंताल्स टीटल मिलता है, जॉब सर्च वीजा पे तब भी ऑफेंताल्स टीटल मिलता है, ठीक है. तो इट इज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि फिर आपको एम्बेसी कैन नॉट से कि हाँ जी भैया आप आइल्स करके भाई पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, जॉब मिल गई है, द कंपनी थिंक्स यू आर ओके, देन no worries. Okay, I hope that answers your question, sir. Is Italy better than Germany for easily getting admission in masters in engineering? No idea, my friend. I would say I only know about Germany. Everyone's coming for masters, so I presume it's easy to get into German universities, or there's a certain demand for it. SAT score का say German university में admission मिल सकता है? No, I don't think so, because SAT is English and maths basically, and English and maths has no place in a German bachelor's system, because you cannot get a master's admission with the SAT. For master you need GRE or GMAT, ठीक है, ये levels बनाए हुए होते हैं. For SAT I don't think it's possible. SAT के साथ आप US में कर सकते हो. I did my SAT when I was doing my undergrad in the US. Any tips for excellent letter of motivation? Be original. Please don't explain your resume. Please don't explain your life. Pick out a certain point. Look at what the scholarship or what the course is all about. ठीक है, कोई एक चीज देखो, उसकी क्या खास यूनिक पॉइंट क्या है, या बिजनेस लैंग्वेज में उसे कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है. उस रिक्वायरमेंट को देखो, उस प्रोग्राम की स्पेशल चीज को देखो. जस्ट नोट 1 or 2 different things. Based on that, उसको बीच में रखे, उसके इर्द गिर्द create a story, and create a story using your own personal experiences. Don't deviate too much, but उसको एक रखो कि उसके इर्द गिर्द story revolve कर रही है, and that would be your LOM. You don't have to say, Hanji, I am motivated, I am applying, I did my bachelor's in this, and with that CGPA, they're not interested in that. Okay? That's
MBA scope in Germany, having 2 years work experience in PK before coming for MBA. Well, MBA, get an एक internship के program में आप कर लें. Just get into an internship program here for about 3 to 6 months, and then after you get out, you have a higher chance of getting a job. Bearded person is accepted in abroad countries. I want to go London for studies and it will apply soon. I'll choose to ignore this. I'll just say that yeah, it has nothing to do with beard. Yeah, I have a cousin, my first cousin. He works in the Department of Justice in the US. और उसकी यहाँ तक दाढ़ी है. ठीक है, तो क्या बात कर रहे हो यार? This is all old thinking. Think about न्यूज़ की भी दाढ़ी सिर्फ मुसलमानों ने रखी होती है, दाढ़ी सिखों ने भी रखी होती है, दाढ़ी यहाँ पे फैशन भी है. So let's move on, huh? Can you stop bragging about being a green card all the time? Duh, sorry Hania. Oh, यार क्या करूँ? Green card holder है मेरे पास Hania, और like holder भी है green card के. ठीक है, I'm just kidding. Fine, sorry, stop being a hater, yeah. And I'm sorry if I offended you, fine. How much minimum one should be earning to become eligible to sponsor their family members, and which family members can be sponsored to live in Germany with the sponsor indefinitely? Very simple. Germany doesn't allow parents. Germany doesn't allow siblings. Germany only allows spouse and your kids. ठीक है. उसके लिए ये होता है कि आपको if you have a decent income, ठीक है, I would say around 36,000. Let's say if you have a full-time job and you're earning okay, ठीक है, okay से मुराद वही कि भाई it's around 36, 37, 38,000. You can actually sponsor your wife. Apart from that, you need a big enough living space, ठीक है, which is around 14 square meter or quadrat meter, यहाँ पे कहते हैं 14 square meter per person होना चाहिए. So if it's you and your wife, then you're supposed to have an apartment which is equal to or greater than 28 square meters. Okay, so but no parents, no siblings, only your kids and your spouse. Can we call spouse on reunion visa during master study? Of course. I have a friend who recently did it. He invited his wife and 2 kids, and he was still a student. Student में सिर्फ ये होता है कि आपको instead of when you don't have a job contract, you basically have to open up a blocked account and deposit 8,640 euros per person that you're sponsoring. So if you're sponsoring just your wife, it's just 8,640 euros. If you're sponsoring your wife and a kid, then it's 17,200 or 17,800, something like that. ठीक है, but it should be blocked. Hey bro, I'm explaining to you Berlin wants to know how likely is it that my parents wanted to pay me a visit and get a tourist visa or something like that. It's quite easy. When I was a student at the University of Leipzig, I invited my younger brother over, and it's very simple. You just go to the Standardbehörde and then get something called a Verpflichtungserklärung. It's basically like a sponsor letter, a formal invitation letter. You just go for your, you take your, if you're a student, that means that you cannot finance them. Okay? So the only thing you can do for them is provide them accommodation. Okay? So what you have to do is just go to your Standardbehörde, go and tell them that you want to invite your parents over. Fine. They will ask you, okay, fine, are you willing to sponsor them? If you say yes, then you have to show a balance of, well, it depends on, I don't know exactly, but for my brother, it was, he was coming over for 1 month and they wanted me to show at least 2,400 euros for that. And unfortunately, I did not have 2,400 euros at that time. So what I went for is, I will be providing him accommodation. So accommodation दिखाने के लिए, I showed them my rental contract. They said okay. उन्होंने वो print किया, करा के they took 25 euros. वो मुझे official document दे दिया. It's not printed on white paper. Proper print किया करके, and then I sent it over to my brother. And he took it with himself to the embassy, or embassy, they gave him a visa. So it's very easy. It's not a difficult process. Similarly, you need travel insurance, you need flight booking. You do not need hotel reservation because you're providing the accommodation. Okay? And then they would need, of course, their bank statements. Okay? Thank you, Hassan Esker. I transferred to Germany University after 1.5 years of study in Austria. Will the German embassy in Austria require me to see आपके मैंने आज कल में पढ़ा भी था. I think your post, but I have no idea. I'm sorry about that. I tried studying, not studying. I tried looking at the German embassy for Austria, and I could not come up with a requirement for 8640. So the best thing is to probably call the German embassy in Austria, because you still have the same language. It's Austria and Germany. They're both German. So
I think they will be able to provide you with a better answer to that. Is 2 year experience necessary? No, is 2 years experience necessary? Or well, necessary for what? What do you say is a chance for a fresh computer system engineer? There's a lot of chances. Even when you're studying, there's a good chance that you can actually work part time and develop softwares, because I see a lot of startups, and I see a lot of people who are basically students, but they're working part time or as work students, and in IT companies. So it's better for their career later on, and it's better for the pocket. बस सर बस कर दें अब, भाभी वेट कर रही है. Thank you, Tala साहब. बस अब मैं करने वाला हूँ. Thank you. Guide me about MSIT scholarship with Germany University. I cannot, my friend. Please use DOT or mastersportal.eu. I have no publication, but will publish my article in coming 2-3 months. In this case, can I apply for PhD scholarship now? Again, PhD में जाने के लिए आपको पहले किसी प्रोफेसर को मनाना पड़ता है. ठीक है, प्रोफेसर को मनाने का ये मतलब है कि आपको you have to have a research proposal, you have to make sure that a professor is interested in your research proposal, and then he's willing to supervise you for that. Then there's a matter of grant. ठीक है, जब जहाँ पे financing की बात आती है तो either sometimes some departments actually have a budget from which they can actually give you a stipend of, let's say, €1,000 per month. So, which is okay. In that case, you do not need any scholarship. On the other end, you can be financed by HEC. ठीक है, वो आपको फाइनेंस कर देते हैं, एंड देन विद बॉन्ड कि भाई आपने पाकिस्तान आना है. अगर नहीं आओगे तो जितना पैसा आप पे लगाए वो सारा आप वापस देना होगा. अगर वापस आ जाओगे तो जितनी देर आपने बाहर लगाई है तो यहाँ पे वो व्हाट्स कॉल्ड, यहाँ पे आके आपको सर्व करना पड़ेगा एक यूनिवर्सिटी में. ठीक है. आई थिंक even without your article, it's a good time if you have a professor convinced, apply for your PhD scholarship right now. There's no time like right now. Shishe to you as well. ठीक है, Sie haben sehr tolle Video gemacht. Können Sie mehr über gleiche Themen in Zukunft? अच्छा जी, थोड़ी देर बाद कर बता देते हैं. आगे वैसे मुझे ऊपर आया था कि भाई भाभी इंतजार करें, तो ओके फाइन. Volume at the dude. Sorry यार. अच्छा, what are the incentives of PhD scholars in Germany? Basically जो मैंने सुना वो PhD के लिए उनको स्टाइपेंड ही मिलता है. They have their status as a student and they can work as a teaching assistant or a research assistant. And other than that, they get a stipend of €1,200 tha dot ka, I think, yeah, €1,000 tha dot ka, in which you don't have to pay for your health insurance. No, you don't have to pay for your health insurance. Okay. You do get one trip back to your home country per year. And yeah, basically that's about it. Sorry, I think that's information regarding driver license. No, sorry यार, ड्राइविंग लाइसेंस कहीं नहीं मेरे पास. वो जो थी एक यहाँ पे ऊपर जो कह रही थी मैं बार बार ग्रीन कार्ड को, हानिया बुखारी थी, वो उनके लिए ही मैं उनको सामने रखते हुए, भाई मेरे पास एक यूएस का मेरा ड्राइवर लाइसेंस, एक पाकिस्तान के मैंने अभी चेंज करवाना है यूएस का. If you marry out for my country and religion, then what about nationality? भाई शादी करके यहाँ पे 3 साल लगते हैं आपको सिटीजनशिप लेने के लिए. Next. Last question, what about doing business? Doing business के लिए 250,000 euros, I think, is required. I might be wrong on that, so please check the BAMF.de website at BAMF. जो मैंने शुरू में बताया था, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. ठीक है, वो BAMF.de, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उस पर जाके पढ़ लें. It tells you everything about visas and working and everything. ठीक है. Urdu has a full credit or double? I've heard it has a double credit for Canada. I have no idea, my friend. But you're studying Germany? No, my friend. I graduated in 2005 and I've been working since then full time as a manager in an MNC. Real estate. But yeah, I think that's more than enough for today. 1.5 घंटे से online हूँ. I will try to do one of these sessions again, and thank you for joining me. My closing comments would be कि जो चीज़ मैंने observe की है अपने career में और अपनी studies में, और 3 अलग मुल्कों में मैं रहा भी हूँ, पढ़ा भी है, काम भी किया है. जो एक चीज़ मैंने सिर्फ देखी है वो ये सिर्फ देखिए कि आपको एक ओपन माइंडेडनेस जो है वो हमेशा रहेगी. आपके अगला जो है यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, एथियस्ट हो, बुद्धिस्ट हो. ठीक है, आजकल आई नो बुद्धिस्ट का बड़ा चल रहा है म्यांमार में, वो बर्मा के रोहिंग्याज जो हैं मुस्लिम का. बट द थिंग इज, बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी ओपन टू एवरीवन्स कल्चर. ठीक है, वो कहें आप उनको कहो हाँ नहीं बहुत अच्छा, दैट्स फाइन, बिकॉज आप जितना किसी पे कीचड़ उछालोगे वो उतना ही आप पे भी उछाल लेगा. ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आई थिंक इस्लाम में है कि भाई अगर किसी के
मज़हब पे कीचड़ उछालोगे वो आपके मज़हब पे कीचड़ उछालेगा, तो प्लीज़ बी अ बिट ओपन। आई सी कि मैं इस ग्रुप में 2-3 कभी कभार इंडियंस या सिख्स या हिंदूज भी कमेंट करते हैं, एंड एवरीवन इज़ वेरी नाइस टुवर्ड्स देम, सो आई कमेंड यू ऑन दैट, बहुत अच्छी बात है ये। दूसरा ये है कि ऑन अ पर्सनल लेवल आप लोग अपने रिसोर्सेज को जितना वाइजली मैनेज कर सकते हैं इट्स बेटर, ठीक है। रिसोर्सेज में टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड और could be your worst enemy, based on the simple fact that कि टाइम निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा, और अभी टाइम आने वाला तो यू प्लान फॉर इट ऑन द अदर एंड, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ले आएगा, ठीक है। सो सो जस्ट बी अ बिट केयरफुल, plan accordingly, have plans, plan A B C, 3 is enough, ठीक है। have always have a backup plan, और क्या कहते हैं, what is it, yeah, so just plan and be very mindful of the time that you spend. आपको थोड़े से हार्ड टाइम में से गुजरना पड़ेगा। I went through that. I was applying for jobs. I was doing a full-time job, जो internship, and I was writing my final year thesis. ठीक है, ये 3 काम मैं साथ-साथ कर रहा था. It was very difficult. दिन का पता नहीं चलता था कहाँ पे क्या, but it paid off at the end. कि I was the valedictorian of my MBA. I got job offers, not even a single offer, 3 offers before I graduated. ठीक है, and I finished my internship. So do that, and inshallah you will be very, very successful. Being a senior, being almost 30 years old, मैंने ये सीखा है, and I would part on these words के just plan accordingly and then trust in yourself, ठीक है। तो I hope तो ये अच्छा सेशन रहा होगा। Thank you everyone who joined us, and thank you everyone, and sorry हानिया अगर मेरा कुछ आपको कमेंट्स बुरे लगे हों। The thing is कि अगर मैं अपने US का ग्रीन कार्ड बार-बार लाता हूँ तो it's one of my achievements. I'm sorry मैं इसको कर रहा हूँ, exaggerate कर रहा हूँ, but it's really is one of my achievements to be a permanent resident in 2 different countries while being a Pakistani resident. So yeah, it's my achievement. I achieved it. I'm also a CSS qualified person. ठीक है? So you don't have to be like me. You don't have to like me. Like yourself, like Allah, and उसकी creation को like करो, and you will be fine. ठीक है? ओके दोस्तों, भाइयों बहनों, थैंक यू, एंड होपफुली इंशाल्लाह फिर दोबारा करते हैं। एंड इफ़ यू एवर कम टू नामस्टार जो हैं लोग यहाँ पे, लेट मी नो एंड वी कैन मीट अप। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।